पोएम है जो मैंने अपनी लाइफ में दूसरी बार लिखी है, तो उसको मैं शेयर करूँगा। महेश थोड़ा ऊपर से। मैं कह रहा था कि मैं पोएम के साथ शेयर करूँगा और शुरू करूँगा, जो कि मेरे काम को भी इंडिकेट करती है। तो पोएम है, क्यों ना अलग से खास बनने की तैयारी की जाए, कैद हो चुके सपनों के पंखों को फिर उड़ान भरने की तैयारी की जाए, उमंग के पंख लगाकर इतना ऊंचा उड़ूं कि आसमां भी कहे चलो आज झुकने की तैयारी की जाए। क्या बात है। ए दिल आशा है जीना यहाँ, जी जी करके तो देख हर मंजिल कहेगी चलो राह बनने की तैयारी की जाए, राह बनने की तैयारी की जाए। तो जो मेरा काम है वो है इम्पेयरनेस एंड डिसेबिलिटी। क्योंकि इम्पेयरनेस समथिंग रियल, और जो एक फिजिकल है वो एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन डिसेबिलिटी है जो डिसेबिलिटी एक सोशो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्टेड है, उसका अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। तो जब मैं गांव में था और मैंने कैसे मुझे, क्योंकि मैं इसमें देख रहा था रिलेशनशिप के मीनिंग कैसे चेंज होते हैं जब डिसेबिलिटी व्हेन अ पर्सन गेट्स इम्पेयर्ड, और जब पता चलता है कि पर्सन इज ए लिमिटेड टू सम एक्टिविटी और कुछ इम्पेयरनेस है, तो उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। और इसमें मैं दोनों चीज़ें देख रहा हूँ, एक सेल्फ और सोशो पॉलिटिकल, दोनों चीज़ें ही होकर जब मैं बात कर रहा हूँ कि फीलिंग ऑफ इम्पेयरनेस, तो फीलिंग ऑफ इम्पेयरनेस आ कहाँ से रही है, तो जब मैंने सोशो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्टेड है उसका कॉन्टेक्स्ट है, तो वहाँ से वो कैसे आ रही है। तो लाइक मेरा क्वेश्चन ये कि फीलिंग ऑफ इम्पेयरनेस कैसे डिफाइन हो रही है, रिडिफाइन कन्वर्ट हो, या उसको रिगेन किया जाए कि फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ओन बॉडी, और फीलिंग ऑफ ब्लिस कि हाँ मेरा है तो आई एम हैप्पी विद इट, और फीलिंग ऑफ सेल्फहुड और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। और वो मीनिंगफुल एग्जिस्टेंट जो आइसोलेशन में नहीं हो सकता कि एक ग्रुप हो गया उसके साथ सपोर्ट ग्रुप के साथ काम कर रहे हो आप, या फिर एक बाउंड्री के अंदर नहीं हो सकता, तो उसके लिए काम आपको सोसाइटी के साथ करना होगा। तो सोसाइटी एंड स्टेट, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं सोच रहा हूँ जब मैं एग्जिट करूँ और अगर मैं एक आइसोलेशन में काम करूँगा, और लेकिन वहाँ थोड़ा शायद कुछ हो भी जाए, ठीक है, लेकिन जो आउटर सिचुएशन है वो तो वैसी ही वैसी रहेगी सोसाइटी की। तो इसलिए मेरे जो एक्सिस है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस दोनों तरफ है, सोशल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्चुअली लाइक जैसे कि कुछ फील्ड से जब मैंने देखा और जब मैंने बातें की लोगों के साथ, और मैं मुझे पता चला लाइक दारू भैया जो है, दारू और सुक्कर मनीराम, उनका जो मीनिंग लाइक रिलेशनशिप के अंदर मीनिंग्स थे वो कैसे चेंज हुए थे। दारू का केस है कि दारू कहता है कि एक्सीडेंट से पहले सब कुछ बढ़िया था। रिलेशनशिप में यहाँ बात कर रहा हूँ, फैमिली सोसाइटी दोनों, फैमिली मेम्बर एंड सोसाइटी, हर जगह रिलेशनशिप के मीनिंग कैसे चेंज हुए। तो दारू जब मुझे कह रहा है कि जब मेरा 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, तो उससे पहले मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी थी और मेरे रिलेशनशिप लोग मुझे भैया कह के बुलाते थे, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई, एटीट्यूड चेंज हो गया उन लोगों का, और वो आज मेरे पास आते तक नहीं है, और जो आइडेंटिटी थी वो भी चेंज हो गई। अब मेरे नाम के आगे लंगड़ा दे दिया, तो ऐसे कहा, तो जो उनको एक आइसोलेट कर दिया, अलग थलग कर दिया। तो और लाइक जैसे एक और केस में जब मैं गया, मतलब
सेकेंड मंथ में मेरे 15 डेज हो चुके थे। उसके बाद जब मैं लाइक रक्षाबंधन वगैरह चल रहा था, तो उसके बाद मैं वहाँ गया और वहाँ उन्होंने एक्चुअली उनकी फैमिली के साथ कैसे रिलेशन, जो कि वो सिर्फ अकेले हैं और उनकी वाइफ है, और लेकिन उनके रिलेटिव्स हैं, और रिलेटिव्स थोड़ा दूर रहते हैं। तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बुलाया था कि वो आए उनके पास, और एक त्यौहार का टाइम होता है, लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। तो उन्होंने भी इनवाइट किया था, वो लोग आए और अपने उनके भतीजों को और उनको इनवाइट किया था, क्योंकि वो बैतूल के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं आए थे। तो उनको वो चीज़ दुखी कर रही थी कि वो क्यों नहीं आए। ठीक है, क्या ये वो इसलिए नहीं आए कि डिसेबिलिटी है, हमारे कुछ है, चेंज हुआ है, क्या कारण था उसका? तो जब वो ये डिस्क्राइब कर रहे थे, वो मतलब कहीं ना कहीं जो उनकी वाइफ थी वो भी थोड़ा, उनको भी रोना आ गया था, और भैया भी थोड़े थोड़े रोने लग गए थे कि ये नहीं, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत खाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे। और ऐसी मनीराम का भी एक्सीडेंट हुआ, कैसे चेंज हुआ उसका लाइफ। जब मैं जाता हूँ गांव में, देखता हूँ एक उनका जो घर में पोजीशन है, वो शायद एक तरफ ही, एक कॉर्नर में है। और तो ये चीज़ें मुझे एक्चुअली ये चीज़ें जब हुई कि मुझे पता नहीं चल रहा था ये हो क्या रहा है, बिकॉज मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कुछ अलग था। फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था, मेरा एक नोशन था कि एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मेरा ये जो क्वेश्चन था वो चेंज होता गया कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो धीरे धीरे फार्मिंग रिलेटेड एक्सीडेंट इलनेस पे आया, लेकिन वो फिर ट्रांसलेट हो गया डिसेबिलिटी के ऊपर, द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द विलेज। और यहाँ पे मैं आऊँ कि क्यों हुआ ये सब चीज़ें, क्यों मैं डिसेबिलिटी, क्योंकि 10-12 दिन पहले तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था, जब वहाँ पे डिपार्ट करने से पहले इमर्शन से, कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है, क्या होगा इससे करने पर। तो एक्चुअली जब मैं इसको क्वेश्चन को ही रिफ्लेक्ट कर रहा था, और काफ़ी लोगों से बात कर रहा था मैं इसके बारे में कि आखिर क्यों है ये सब चीज़ें, तो फिर एक्चुअली मैं रिफ्लेक्ट करने लगा कि क्या है। तो एक्चुअली जो ट्रेसेस थे वो शायद मेरी लाइफ के अंदर ही थे, मेरे चाइल्डहुड के अंदर। और क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंज था, मुझे पता ही नहीं था, कि सब कुछ अनकॉन्शियस लेवल पे था कि ये कर ही क्यों रहा हूँ मैं, डिसेबिलिटी ही क्यों। ठीक है, मेरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं था इस डिसेबिलिटी के साथ जो मैं सोचता था, लेकिन फिर भी था, फिर भी पता ही नहीं था कि क्यों है ये। तो जब पता चला कि मतलब थोड़ा पीछे जाने लगा फ्लैश के अंदर अपनी लाइफ के अंदर, कि एक्चुअली मैं आई वॉज ऑल्सो डिसेबल्ड फॉर 2 years इन माई चाइल्डहुड, जब मैं 7 साल का था। तो बस वहीं से मेरा थोड़ा कनेक्शन शुरू हुआ, और then जब मैं इसको सोचने लगा और रिफ्लेक्ट करने लगा, तब काफ़ी चीज़ें अनकवर होती गई कि ये क्यों है। देन कनेक्शन इस्टेब्लिश होता गया कि अब कैसा लगता है जब कोई इंसान इम्पेयर्ड होता है, या फिर लिमिट हो जाता है कहीं ना कहीं, और क्या होता है उनके रिलेशनशिप मीनिंग कैसे चेंज होते हैं। तो एक्चुअली मेरी लाइफ से ही कहीं ना कहीं आ रहा था, और ये धीरे धीरे एक लाइक अभी मैं सोच रहा हूँ, और पीछे कुछ गया कुछ दिन पहले, मैं पीछे 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 मैं इसको ट्रेस करता ही गया कहाँ तक जाता हूँ मैं। और मैं पहुँच गया जब मैं 7 साल का था, और जो रिस्टोर्ड मेमोरीज थी वो लाइक कॉन्शियसनेस में आने लगी कि हाँ ये चीज़ें थी। उसके बाद ये मेरा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ, और then, मैं उसके बाद ज़्यादा इंगेजमेंट मेरा हुआ कि इस तरह से करूँगा, और उसके बाद ही मेरे टाइम स्पेंडिंग ज़्यादा हुई, इंगेजमेंट ज़्यादा हुआ। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन पे पहुंचा यहाँ पर, और ये जाना कि कैसे
सोसाइटी के अंदर कैसे देखा जाता है। और उसके बाद मैंने कुछ मीटिंग्स वगैरह की, और एक मीटिंग्स उनके साथ भी की लास्ट डे पे जब मैं निकल रहा था वहाँ से, तो लास्ट डे पे उनके साथ भी मीटिंग की। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि क्यों, आखिर ये मेरा क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन क्या है। तो जैसे ही जब मैं एक दीदी के घर रुका हुआ था, वहाँ पर उनके जो हस्बैंड थे वो भी डिसेबल्ड थे, पोलियो था, पोलियो है। तो उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि हम हिम्मत और हौसले के लिए आना चाहते हैं। हम एक पहले हमारा ग्रुप हुआ करता था, लेकिन वो डिसबैंड हो गया, अलग हो गया। उसके कारण अलग अलग मैंने उसको जानने की कोशिश की, हॉस्पिटल से बात की, उन लोगों से बात की जो वो जिन्होंने ग्रुप फॉर्म किया था। तो मेरा जो था कि वो उससे कैसे अलग हो, क्योंकि पहले भी था, लेकिन अब इसमें अलग क्या होगा। तो वही जैसे उन्होंने बोला था कि हम हिम्मत और हौसले के लिए आना चाहते हैं और शायद आगे रास्ते खुद खुलेंगे। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि एक पर्पस देने के लिए, शायद वो उनका लाइफ है एक तरफ है जहाँ अपने आप को आइसोलेट फील करना, सोशलाइज भी नहीं होता एक्चुअली में, पब्लिक स्पेस के अंदर उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो पार्टिसिपेशन कैसे वहाँ पे क्रिएट किया जाए स्पेस के अंदर, कैसे स्पेस बनाया जाए। तो मैं इस पर सोच रहा था, क्योंकि एक किसी को अलग कर देना, एक्सक्लूड कर देना, वो उससे कुछ नहीं होने वाला अगर आप उसके साथ एक तरफ काम भी कर रहे हो। और अगर क्योंकि उसके साथ काम होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सोसाइटी के साथ भी काम करना पड़ेगा कि कैसे वहाँ पे स्पेस में पार्टिसिपेशन उनका बढ़ पाए। तो ये मेरा वर्क होगा, मैं कैसे करूँगा इसको। तो इसके लिए जो अभी तक सोचा है और जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, वो ये कि सेल्फ लेवल पे जैसे काउंसलिंग सेशन, एक्सपोजर विजिट है, कैसा लगेगा जब वो एक दुनिया देखेंगे जहाँ लोग कर रहे हैं, ठीक है, और अभी नहीं होगा। तो एक्सपोजर विजिट और आई बिलीव कि हेल्पिंग देम टू हेल्प देमसेल्व्स। तो वहाँ पर मेरे एग्जिट करने के बाद भी कैसे एक बिगनिंग तो हो, और सोसाइटी, और जब मैं बात करूँ सोसाइटी और सेल्फ की, तो दोनों तरफ से काम। और सेल्फ वो दूसरे के लिए भी शायद मोटिवेशनल फोर्स बने। दूसरे विलेजेस के अंदर जब मैंने बात, दूसरे विलेजेस के अंदर भी अब किसी में 12 है, क्योंकि मेरे विलेज के अंदर 12 लोग हैं जो है डिसेबिलिटी है किसी ना किसी तरह की। और ये एक ऐसे तरह का, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि डिसेबिलिटी है वहाँ, और मेरे लिए शॉकिंग क्या कहते हैं वो था कि मुझे फर्स्ट इमर्शन तक मुझे पता ही नहीं था। एक इनविजिबलाइज्ड कम्युनिटी है कम्युनिटी के अंदर, और उसके अंदर भी इनविजिबल कम्युनिटी के अंदर भी एक इनविजिबल कम्युनिटी है, वो है वीमेन। तो वो भी कहीं ना कहीं, और वो भी मुझे वो डिसेबिलिटी बाद में दिखी, सेकेंड इमर्शन के आफ्टर 1 मंथ दिखी। और जहाँ तक मैं अभी 6 लोगों तक पहुँच पाया, और मेरे गांव में 12 लोग हैं, उसमें भी जब मैंने पता किया कि कितने लोग हैं ऐसे, तो 4 वीमेन भी हैं। तो वहाँ तक भी मुझे पहुँचना है। तो इसमें हमारा काम एक्सपोजर और सोसाइटी में काम है, थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड जो है उसको अवेयरनेस के लिए और माइंड सेट चेंज करने के लिए, और स्टेट के साथ काम करने के लिए कि स्टेट के साथ कैसे काम किया जा सकता है इस इनिशिएटिव के अंदर। तो यही था। Spoken about it, that he has understood from his own life that disability can be a universal condition, human condition, right? And yet disability as a universal human condition is always understood without a historical context, So I think that is where Mahesh is going to try to work further. That historical context means where he mentioned the accidents, for example,
And if you take up accidents, that day we were discussing about the pellets, that day we were discussing about, the landmines and all, various things which can create disability, impairment. And when I say disability, it means that you're oppressed by the society because your own, understanding and how what the infrastructure is, how you are placed, in education, in employment, I mean all the areas which are there. Because what Mahesh hasn't mentioned, Mahesh probably would try to do that, where we also try to ask about the citizenship part. Are you really a citizen or not of this country, where you are people with disabilities, but are you part of the citizen or part of the country or not? So when we are trying to do that, we will work in that village so that we work at two levels. One, working with the internal oppression that is there within the people who are there, so that their self could also be kind of energized in one particular sense. Obviously, there is no magic anywhere. It is just that we work with them so that they can then be agentive enough to kind of say that of course we can find a way and find a voice. I think that voice is very, very important because mostly they are silenced completely, because of the derogatory words like langra, like anta, or whatever, that which is used, and you're almost negative, in that sense. The other level is the action level, because I think in action, one part of course is awareness and sensitivity itself, I think, and then of course the idea is that we would be linking up with maybe the small towns which are there, and also within the village, look at the sarpanch, look at the panchayat, look at the people, and how do we, and he of course is very, interested in theatre of the oppressed and how to, create these themes for them, and how the community itself, first of all, starts respecting the people who are there. Because I think it's a cultural construction that, disability is like a retribution for past sin, and he has mentioned in his write-up, which will be there, where he says that even his own mother, at times is, kind of trying to say कि तुम मेरे लिए burden हो, and I tried telling him कि हाँ वो कहती होंगी, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है, क्योंकि उनको अपने ऊपर भी वो खुद गिल्टी फील करती होंगी कि मेरी वजह से एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैंने वो सेम रिक्शा में थी जिसमें ये आ रहे थे उनके साथ. So एक तरह से it's almost like the mother blaming part also comes into that, which is also, and the burden part which is there with him. So I think that is where we want to take up two levels. One level where we can, like when I asked him that what is, do they have a certification or not, and he said कि पूरा पता नहीं है कि है नहीं है, which we will have to go and ask, find out. The government of India gives you a stipend which is, you will laugh actually, it's like 300 rupees. Nothing more than that. So now we have to find out whether he's getting that, they're getting that 300 also or not, So our first job is that whether we can, do something where, we could have camp of the certificate, people need their certificates, and through that at least get that much of, which is nothing, but at least, with them at least a, way that you can. And then we are also going to do a review of various schemes that can be used by the state, whether it's Velega or whatever, so that we can see that whether we can kind of tie them up together in that particular sense. And of course, he's spoken about the exposure, Yeah. I think for me, what is important is, and what I have been trying to talk to him also, that's a question for him also, how much can we understand from the political economy of disability which is there, because that is something which we, I think, have to find that disability, okay, can be a social construction, but impairment actually is a material reality. You cannot do anything. When you say lack in a Lacanian sense, it is different. But when you say that
well, of course I cannot walk, or the other person cannot see or cannot hear, or the intellectual, they are not, impairment is there. So, and there's so much diversity in disability that we also will have to find out that there are different kind of things that we could be able to kind of, look for them. And I also feel, which of course this Mahesh and I have discussed, that state has been abdicating actually responsibility because there's too much of NGOization, that everything give to NGO, everything give to NGO. So I think Mahesh is also very keen that we could kind of, relate to the state and say that what are the rights that we have and people with disabilities have, and those rights must be at least accrued, at good. So I feel that in itself is action, where we can, if we can do that much also for these people in the village, then of course there is a chance that, this agency can come up, and especially when he looks at those 4 women, because I'm very keen on, issues of gender and what you've already spoken about that. I think so that is also very important because within the village there is also not only patriarchy, and along with normative hegemony, there is also patriarchy, so you've got to also take that into consideration. And I think what he hasn't mentioned the word, but he has written, we are talking about the becoming, and not the being, being would become like more the static part, but I think the becoming of, a person with disability in his own self as well as in others. So I think that would be, that is the idea through which we will, progress. Mahesh, if you want to add anything? So me and Mahesh have also had like 4 or 5 conversations. We took a metro ride with me in Hostas yesterday and we were just talking. So me and Mahesh have also been talking, and like Rita just pointed out about citizenship. Yesterday we were talking about right to life with dignity and then respect. Yeah. And then we were talking about these 2 issues. And then in citizenship, kind of an understanding, right to life with dignity has mostly in Supreme Court judgments translated into right to food, right to education. However, this part about respect, about dignity in the way you interact, and that respect in your participation. Those were 2 things that we kept talking about, how that is the part that is missing, how that is the part that makes you disabled rather than just impaired, which is the physical reality. It's about that respect of your participation, respect of the view that you have. So when you're talking about panchayats and meeting with different state actors, and the way I have also started looking at governance in terms of it not being an interaction where 2 people just talk, it's more of a practice where there is a historical meaning system coming to everything that you do. So if you're sitting in a particular manner, it gives a particular meaning, which will translate how a particular policy is being given out. Yeah. So if you go to if suppose a person with disability goes to the bureaucrat and he's treated or spoken to in a particular manner, that says a lot more about the practice of that governance rather than merely the interaction of governance. And that's something that, like in our discussions and would have heard about discussions that he's had with Anita, is that we want to work on both these levels, and that's the point that she was making as well. There is the individual one within also the participation part, and then there is this basic set of rights that you need to have. It's not about just the constitution saying you have these rights or the law saying that you have these rights. You should be capable, have agency enough to be able to claim those rights, have access to those rights. Okay, I can move anywhere in this country, but if I don't have access to roads, if I can't reach the road from my house, how is that right being claimed by me? If the state says I have 100 days employment guarantee and I can't reach the work site, how is that even a guarantee? So those are the things that we have been talking about, and then that's where it becomes as much about the self in Mahesh, the self in each of these, Dharu Bhai and everyone,
as much as about the socio-political, how the society respects their participation and how the state enables their claim making on the state rather than just saying, okay, this is the intermediary that you interact with. So those were two things that we had been, till yesterday, were talking about. Let's see, yeah. So, Mahesh, I was just thinking, and it's important, and it's interesting that throughout your presentation, तुम बार-बार ये emphasize कर रहे थे कि, so I think it's a very interesting connection in that sense that like usually hear people say that they're working on impairedness or visibility, but what I hear you saying a lot is that you're working on the absence of relationality when you are impaired, which is a very interesting thing around understanding, impairedness in that sense. So you're not saying just that this person is suffering, let's say, because that this person cannot walk or cannot, cognitively think, etc., etc., but this person, that leads to an absence of sociality, of a kind of relationality that is available to others who can, in that sense. So for me, that is very interesting, and then your movement to the question of transformation of the self, the social and the political, or the stage, if you call it, becomes very interesting because when you look at from this angle of relationality, so there is a certain kind of self transformation that you and Anita are thinking about, that when a group sits together, how do they make sense of their own condition, how do they come to terms with the awareness that is required, the exposures, etc., etc. And with respect to the state, we are saying that state is useful till the time that it can give us the benefit of what can be claimed as a right. But what it is to transform the state's perception also is very important in that sense. Because political transformation does not mean claiming the right, but it also means how does the start. So the question of citizenship, absolutely. How does the state starts recognizing, let's say, the person who's impaired? And the question of the social with respect to relationality, I think social transformation in that sense, as I can imagine or think about, is that then it's not only because you're opening up the question of relationality and saying this, that it's not only a question of being accepted as somebody who's impaired, but also the notion of care. That how am I being taken care in or how can I be a person who can take care of somebody else, because it's not only a question of receiving care because I'm impaired, but how can I provide care to somebody? And that is what relationality is about, right? So creating those mechanisms where what is this relationship between the husband and the wife, where somebody who doesn't turn up, the wife cries for the absence of, so those nuances, those relationalities of care have wings, like it has to come out in certain ways. That day before yesterday, Mahesh, we had thought about also the understanding of cure versus care. We written about this because I see what happens even in our society. What they want is to cure ho jana chahiye. Yeah. And cure is impossible. I mean, if you look at any of the narratives of the people with disabilities, they will say that we have gone through God knows how much traumas because of whatever, and they always want to be cured, but that's not possible. So the only possibility is what you're saying, care, and care in a sense where when we were discussing that the giver and the recipient, it should never be that you're dependent upon me, but it should be an interdependence which is there, where I can also give you something and you can also kind of be there. That is something. But of course, Delhi, what do they say? Like he also kind of took this point, which I think has been mentioned, is also that the difference between the urban and metropolis like Delhi. Interviews that he has conducted in his village.
And those interviews actually, offer a critique of the regimes of care to develop an understanding of the care that you're coming with. And, because the care framework is also always posited against rights. So are you caring for? And what it is to care for also has this very critique that, where it is posited against the rights framework. So are we not immediately that this thing would be, people will jump onto it and saying, what about rights? But but here I think the lens of care, is a different kind of a care. It's not the what the state did to the permanent liability. It's treating the women of partition refugee camps as permanent liability, which also included interestingly differently abled people within that category. When you're treating them as permanent liability in your regime of care, and that's where the discourse of rights began in the partition refugee literature. But your work could come across as a critiques of regimes of care as well. Yes, that is very good. Like that peg on the relation of care is a good There was a discussion in class, did that with us, where he said that, like, he started off with the fact that cure needs a disease and care needs another. Cure needs a disease. Care needs another. And care needs another. And then he went on to, I think, show that this is a care which cannot be delivered. It cannot be commodified, it cannot be delivered. So therefore, cure framework comes in the service delivery mode. But care needs to be specific, contingent, and at the same time, it has to be performed. Yeah. Somebody will have to do it. It's not an easy job. Nivedita had a Yeah. I actually had a question more out of ignorance. I read what you wrote and I found the discussion also very enriching. But what I'm grappling with is two or three things. One is, in short, that this is an area that I too have not worked with. So I've been trying to imagine looking at the care, looking at it from the care point of view, just now, not the point Bhavya raised, I'm 100%. Getting the 300 rupees from the state is not transformation. Getting the state to change that bloody 300 rupees, that I would fight for. But in a day-to-day sense, who are these, in the village that you're working in, these individual narratives are not building for me a picture of who is actually interested in taking responsibility for this or not. Who's owning this issue in your village? Is this really an issue of one or two villages, or do we really need to look at this a little differently? I don't know the answers. And third is that if I was to do, I always think that after Mahesh is done with all his work, what am I going to do with what he leaves behind, and what is he going to do with it, and what are others going to do? And we need to have something, kernel, not only of understanding of it. Because I think if you look at, for instance, New Delhi, there are enough people who will tell us what should be and what isn't. So I don't think there's a deficit of that really. But in that particular context, how are we really going to, and who is going to address this? I'm greedy to know about that. Maybe not now, but at the end of your work. That for me would be a very important, even transformational axis. It cannot be that it's their problem and they have, women have to organize in order to fight. This does not work here. Does not work at all. So what works? If you had to put in some energy, I would request you to put energy in there. Rita, I think what he has actually mentioned is to create a support group. Much more than that, because Much more than that, no, but there's a family. if it is completely absent, you'll have to begin with it. Huh? You just can't kind of say that, okay, fine, if there is something, when you talk about Ekta and when you talk about, we just simply have some narratives, right? On the basis of those narratives, we have to try, but they do indicate that एक disband हो चुका है इस group. But it means कि there is something there जो कि एक बार जा चुका है लेकिन आएगा. हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा आ सके.
और and he keeps on saying कि मैं exit अगर करूँगा तो क्या होगा? He's very worried about that, you know. कि मैं ड्रीम सिर्फ देखकर नहीं आ सकता हूँ, आगे भी जाना है. I'm tuning into that. Yeah. So one is, you know, the vision which he has is that how we can, within whatever time, I mean, it's not that much time which is there, but even if, you know, you can connect to the community, to you know, the some of the actors who are there, you know, I feel that there is reason for, you know, optimism in that sense. Yeah, and who are those actors? How do they relate with it? So that, you know, the density of that would be very useful. Yeah, very useful, but we will have to do the mapping, you know, and we will have to find out that where exactly can we kind of, you know, locate these people. I mean, like, I thought about, you know, maybe the panchayat, you know, in one sense, you know, or I mean, one is not 100% right on that, because I will have to go there and find out what exactly can be done on that account, you know. You are right when you say that it's a very serious question. But I feel from whatever my own work in Bangalore, there was a village again, and then we've been working in Jharkhand right now. You know, we've just finished this work. You know, but we try to find out that in the beginning there is nothing, but slowly the group evolves from there. You know, and then even if there is, you know, Nimitta, I feel that even if your own self has been, you know, I would say activated in one sense, you know, and then you kind of, you know, have reason for hope, you know, that you can go ahead, you know, that's how I think, you know, in that, so that the voice can kind of, you know, come out, you know, that is what I think. I'm not sure whether, I mean, like, you know, you are absolutely right when you're raising that question is there in my mind also, but I also feel that the connections that he manages to establish with maybe another village or Bhopal for that matter. I mean, like, you know, there are many NGOs in Bhopal, you know, which are there, and I mean, I know a couple of them, and I feel that there would be reason for us to connect it to the villages and, you know, see how they can kind of, you know, help them out help is the wrong word, assist them out in that particular, you know, action that Mahesh is kind of visualize. So of course it was a difficult. It's not Because it's not a homogeneous group. yeah, precisely. There are Right. children, there are adults, there are teenagers, Yeah. there are different. Yeah, but I think Yeah. but Nivedita, I think what he is saying and what I kind of understand, there is nothing right now. There are only people who are mourning about their life and who are kind of trying to say, do we have a reason to live? Exactly. If I think we can create and sustain their living, I think I would say that it's action enough. I mean, like, जब हमने सोचा था, जो मेरा ओरिजिनल आइडिया जो आया था पहले शुरू में, वो आइडिया जो एक्सपीरियंस के साथ जो हुआ था कि जो फीलिंग ऑफ यू नो सरेंडर टू द सिचुएशन, कि फीलिंग ऑफ रेजिग्नेशन, सेंस ऑफ रेजिग्नेशन जो आया था कि वो कैसे उसको ओवरकम कर पाए, वो मेन आइडिया कि वो उसको ओवरकम कैसे कर पाए। और बिकॉज कुछ ऐसा था जो मैं उसको खुद ही अपने अंदर लाइक फीलिंग ऑफ ऑपरेशन, इंटरनल ऑपरेशन, तो वो मैं कैसे उसको मैंने कैसे कन्फ्रंट किया, एक्सेप्ट किया, तो वही शायद मैं चाह रहा था वहाँ पर। और जब हमने पूछा कि ग्रुप में कि हम क्यों आना चाहते हैं, 6 लोगों के मीटिंग के अंदर 5 जो लोगों ने रेजोनेट किया था कि हाँ हिम्मत और हौसले के लिए आना चाहते हैं, बाद में कुछ रास्ते खुलेंगे। एक व्यक्ति था जिन्होंने कहा था कि हमसे कुछ लाभ भी हो उसके अंदर, ठीक है, कुछ पैसा मिले। Yeah, we can't completely denounce these. हाँ, Yeah. एक व्यक्ति ने कहा था गोरेलाल ने। हाँ प्लीज। एक दो बात मैं पता नहीं कितना ही आपको मदद करेगा। इसके बाद मेरे पास 2-3 स्टोरीज है जो मैं आपसे शेयर करूँगा, बाहर निकल के हम कर सकते हैं। एक आध
मेरे गांव में एक लड़का था जो बोल नहीं सकता था और वो 6 फुट से ऊपर मतलब का था और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का था वो पूरे गांव में। और उसके साथ जो रिलेशनशिप था पूरे गांव वाले का वो बहुत केयर वाला था। हर कोई उसको कोई पैसे दे दिया, खाना दे दिया और बहुत मतलब लोग उसको बहुत केयर करते थे। उसके फादर का और उसके मदर का उसके साथ जो रिलेशनशिप था वो एक नॉर्मल फादर और मदर के बीच में होता, कभी डांटना, कभी उसको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये चीज़ था। तो केयर से जब आता है तो जब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमने डिसेबल पर्सन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जो कि स्पेशल है, जो उसको रिमाइंड कराता रहेगा कि वो एक्चुअली ये काम नहीं कर सकता, इसलिए हमने उसको वो दे दिया। वो पेरेंट्स, इसलिए मुझे वो लगता था कि उस पेरेंट्स का जो वो डांटना, उस बच्चे को डांटना होता था और या उसकी मदर का, ये जो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है एक सन और उसके बीच में स्पेस में, बिल्कुल जैसे वो उसका एक बड़ा भी भाई, तो भाई जैसे वो बड़े भाई के साथ उनके पेरेंट्स करते थे बिहेव वैसे ही उसके साथ करते थे। वो मुझे कहीं ज़्यादा वो टच किया और पूरे गांव वालों का जो बिहेवियर था कि वो स्पेशल है वो मुझे, तो ये केयर का जो रिलेशनशिप बना तो केयर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हमने बस के लिए बस में बना दिया ताकि वो रिमाइंड कराता रहे कि तुम नहीं डिसेबल हो, तुम नहीं चल सकते, है ना। एक ये पॉइंट इस तरह से मतलब उसी गांव में जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो एक आता है इसके साथ बिहार में पता नहीं मैं नाम भूल रहा है एनजीओ का, शिवाजी नाम के कोई है, बहुत लंबा चौड़ा उनका इसके डिसेबल पर्सन के ऊपर है। वो डिसेबल पर्सन का ओलंपिक वगैरह होता है, तो ये चैनल जिस तरफ से, क्योंकि मैं एक एनजीओ के साथ काम किया था, ऐसे ही को मेरा दोस्त था तो उसने बताया कि तुम कुछ इसमें हेल्प कर दो, वो इस्टेब्लिश कर रहा था, तो वो गांव का बेस एक गांव के एनजीओ ने बनाया और वो खुद डिसेबल था वो लोग, तो उसमें मैं हल्का फुल्का अकाउंटिंग में सब कुछ में मतलब शुरू में एस्टेब्लिश करने में वहाँ पे था, तो मैंने हेल्प किया उसको। उसका जब चैनल मुझे जब बाद में पता चला कि क्या क्या वो अंदर जो मुझे पता नहीं चला था शुरू में, शिवाजी से कोई और कंट्रोल करता था। शिवाजी डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक एनजीओ था, उसको कंट्रोल करता था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एनजीओ था वो गाँव वाले को कंट्रोल करता था। और इंटरेस्टिंगली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एनजीओ का जो ऑनर था वो लोकल इलेक्शन लड़ता था अलग अलग जगह, और वो उस पूरे चेन को वो यूज कर रहा था अपने पॉलिटिकल उसके लिए उस वोट के लिए, यानी कि मैंने आपका सर्टिफिकेट बना दिया है, मैंने आपको 300 रुपये दिलवा दिया है, 500 रुपये दिलवा दिया, सर 500 मिला, 300 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट उसने दूसरा ऐड करता था वो दिलवा दिया। ये सब मुझे बाद में पता चला कि कैसे वो उस चीज़ को यूज कर रहा है। तो जब हम स्टेट, इसीलिए एनजीओ के बियॉन्ड जाकर के स्टेट जो बात कर रहे थे कि हम अगर हमारा स्टेट के साथ रिलेशनशिप है तो हम क्लेम करेंगे, ये हमारा राइट है उसका, और हम बीच में जो एनजीओ आ रहा है जो उसको इनडायरेक्टली यूज कर रहा है अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, और एक कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बना रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर दया कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो बहुत मुझे मतलब बाद में मुझे लगा कि मैंने क्यों उसको, लेकिन फिर ये लगता था कि चलो कुछ नहीं मिल रहा था उसको, 300 भी नहीं मिल रहा था, सर्टिफिकेट भी नहीं था, तो चलो कुछ तो है, ठीक है, वोट पैसे भी किसी को भी दे रहा था तो कौन सा कोई कुछ कर रहा उसके लिए, तो चलो 300 तो उसको मिलने लगा या उसको सर्टिफिकेट तो मिल गया है। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखना, जब कुछ करेंगे उस स्पेस में जाकर के, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने बोला इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जो एनजीओइजेशन का प्रॉब्लम होता है ना, उनका जो ओरिएंटेशन चैरिटेबल ही रहता है और कुछ नहीं रहता है, वो मतलब यही है कि अच्छा कुछ करते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली है कि गांव में अगर आ रहा है उसका कोई आदमी भेज रहा है तो 100 लोगों की भीड़, जो लोग हैं उसके पूरे फैमिली वाले आएंगे, ताकि नेता है तो 100 लोगों की भीड़, 500 लोगों की भीड़ चाहिए, तो वो लोग जरूर उनको आना है। आपका मोरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आपको करना पड़ेगा, आपको उसको वोट देना, और उसके बदले जो बीच में मैनेज कर रहा है वो पैसे खा रहा है लंबा। इस तरह के और भी चीजें मेरे साथ हम बात कर सके, मतलब हम करेंगे बैठ के। वहाँ पर वो याद आता है, वो पैट्रोनाइजिंग वाला चीज जो चैरिटी। नहीं, और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो गाँव की बात कर रहे हैं ना, मैं जब एयरपोर्ट पे जाती हूँ ना अंदर, तो पहला क्वेश्चन वो ये लोग पूछते हैं कि आपके साथ कोई है,
मतलब मैं मोटराइज्ड व्हीलचेयर में अपना सामान उठाया हुआ है, मैं लेकर अंदर जा रही हूँ। मतलब कभी-कभी मेरे को लगता है कि मैं इसको ना मतलब पटाख बैग्स के सर पे मार ऑनेस्टली वायलेंस आता है मेरे अंदर से कि भाई मतलब क्यों समझ में नहीं, और मैं अकेली क्यों नहीं जा सकती, मतलब लाइक यू नो बिकॉज तुमने मुझे कंस्ट्रक्ट कर दिया ना पहले ही, और मैंने तो नहीं कंस्ट्रक्ट करा। मैं इसीलिए एक पूरे ग्रुप के लिए मैं अक्सर एक ये टर्म यूज करती हूँ कि हम सभी लोग जितने लोग यहाँ पर हैं वी आर एक्चुअली टेम्पररी एबल बॉडीड हैं। ये क्योंकि हम लोग मानते हैं कि डिसेबिलिटी हो, लेकिन डिसेबिलिटी तो किसी को भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। मैं इसीलिए पेलेट्स का एग्जांपल लाना चाह रही हूँ क्योंकि अभी हुआ है, थोड़े दिन पहले ही आप सबको पता चला ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है और क्या, लेकिन आप यहाँ पे जाए किसी को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। हो भी सकता है, It can happen, and you realize that you know no longer what you were, and suddenly your entire fate has been kind of put in somewhere else, So I think that is something. If we can remember that we are all temporarily able-bodied, then I think it is easier to understand disability, because in each one of you, and I will also pick it up in a psychoanalytical way, that the disabling parts of each of self that we have, all of us have disabling parts. So, I mean, it's not that we are not there in that sense. So I think if we can address the village, then I think I'm not really scared in that sense. And when he said hope, I often say that hope is always an accomplished liar. But hope is still hope. So stay with hope. Whatever it is, stay with hope. Even if it is an accomplished liar. You find out something, ना कुछ तो मिलेगा उसमें से। माने आपको मट्टी तो नहीं मिलेगी ना, you will get something, right? I think जो जरूरी सवाल संजीव से उठा रहा है हम लोगों के लिए वो ये है कि फिर केयर क्या, लाइक केयर भी करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक ही हो सकता है कि मैं I'm feeling so much pity, and that's not a person's problem, that's my problem, that I see the person as that pity is the emotion that gets generated, right? और उससे मैं केयर कर रही हूँ या मैं तो सवाल एंजॉयजेशन या स्टेट या मतलब उसका नहीं कि कौन किस तरह से अप्रोच करता है, सवाल ये है कि आपकी एक्चुअल परसेप्शन क्या है। तो और जहाँ पे एक बार ये बोल रहे हैं कि जब मैं ये सोच के एक्सटेंड कर रही हूँ अपने आप को कि भाई ये मेरी खुद की बॉडी भी टेम्पररली या टेम्पररली एबल्ड, we have to the notion of care has to be thought perhaps somewhere from this. No, that's where I was trying to come in. But let's not make, I mean, I don't know what you're planning, but it could be interesting to see, because it's not only about the person who has whatever you may say, who's differently abled, or it's about being an empathetic. I mean, it's not also a support group of others like myself, because in a sense, it's the same question we were always asking Bhavya, that it's not only about the single women in that village, but every woman has, will have this singleness and singlehood. So this whole issue is not only about them. So somehow it becomes for the rest of us very easy. One is of course the state and NGOization and all that. I mean, I'm way beyond all that. I'm just thinking, even amongst ourselves, it's very easy to say, okay, let them now have a group and keep meeting and let them figure it out, and वो थोड़ा बुलंद हो जाए तो सब बदल जाएगा. But maybe we want to re-look at this question of care in a deeper way. Relationality, care. When we talk about making the village more habitable, we are not talking about the village only as a topography. Of course, that's important. But we are also talking about, I don't know, community or however you construct it. Different people who live. But without that, we cannot even do it. So and what- that's why it is a simultaneous work at So self. it requires work at that. So that will be very interesting to see and to learn from.
No, and also I also feel that sometimes it helps, and I often use this kind of. I mean, when I have gone to a village, where I'm there for 3 days, I've often seen that in 3 days there's a remarkable change that comes up, because then they feel that there are human beings who can live like that, I'm not privileged enough to kind of do whatever they are doing, and in this strange way. I mean, I'm always kind of, I'm not saying that it happens all the time, but sometimes it happens, and I remember, in fact, there are many things which you will have to look up. Just like I was in a village for, and I fell down in one of the PWD places, and I couldn't open my door. I had to wear the clothes before I could have come, and I fractured my door. For 3 days, we couldn't find a place where we could have gone for X-ray. Now that in itself, I mean, if you look at a broader vision of disability, also that so you do need some, and that would be for everyone in the community also, that you need some health facilities wherever you are there. So I mean, it is right in but he has to structure this in that. I've also had very little time with him. I mean, he's only come after this, so I think we also have to really work out and Very interesting. yeah, of course. Very new for all of us. I think for me, it's not simply interesting. I think it's reality for me, and I feel that But in that, it's reality for all of us, but we have never attended to it in the village before. Yeah, Neither but have you. because I have been, now I've started doing it, so I am more hopeful that if we can open up the opportunities, which can be. I'm not saying that it's not like a schizophrenic delusion, which is there. I mean, I'm quite clear about that. ऐसा नहीं है, कई बारी बहुत कम हो We पाएगा. are all very And I can tell you that this field guide Shahid is also very interested in understanding that. So we may be setting up a meeting between him, you and Mahesh. And there are these pockets where these mines and all these are being casted, and there are many more people who are around that place who are having similar. It may be an area where the team also picks up their work, because Pradat has, in Pradat I have heard many people talk about it. So it was never like we didn't know how to go about it. So maybe this will give him an opening for us. It's a starting point. Yes, it is. Yeah. And actually मेरा point अभी हम जो नेचुरल डिलीवरी बता रहे थे वैसे पॉइंट आता है इट्स लाइक कि हम केयर क्यों लेते हैं और ये केयर कहाँ से आता है एंड द पॉइंट दैट मुझे नहीं मालूम है अभी आपने जो महेश आपने बताया मुझे पूरी अभी स्टार्ट नहीं कर रहे थे मालूम बहुत द पॉइंट द इनिशियल पॉइंट इज दैट कि हम केयर करते हैं सो लेट्स डू दिस थिंग सो air hostesses are supposed to take care in their flights. But for what? Their smile is being sold. The same, their smile so that they get their wage. Okay. In the same way, the hospitals will get care. But there is it behind that. Let's come to some of the traditional level पे आते हैं. मतलब पूरा village level में हम लोगों को कुछ देते हैं जिससे भगवान हमें आशीर्वाद देगा. भगवान हमें देखते रहेगा. तो हर एक फॉर्म ऑफ केयर, हर एक केयर के पीछे एक कोई ना कोई मीनिंग अटैच हो रहा है. और दूसरा बात है कि ऑब्वियसली स्टेट और हाँ इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग एक नोशन सेट हो रहा है, दे आर सेटिंग अ नोशन इन अस दैट कि यू आर डिपेंडेंट, यू डोंट नो वेट तुमको नहीं मालूम है कि फ्लाइट का घुसना कैसे है, बट इवन दो यू नो इट, बट वी आर हियर टू सपोर्ट यू एंड नॉट नीडेड ए सपोर्ट लाइक द स्टेयरकेस जो चढ़ना होता है उसमें रेलिंग्स है. That's not a support, that is the physical support, but they are making an illusion that we are giving a moral support also, which might not be needed for us, but we are becoming dependent. And the whole notion which I'm and actually is coming again from my dissertation work with children and my internship work in Rajasthan, where I have met a few people, I have small interaction with the authorities over there, and I met with
people with disability also. The point, one or two only, not much. So the point is that from there it's coming, and then the dependency and what all level the dependency comes. So and the care, the point of care and dependency can be this and not only, and in general I will say, I don't want to bring it, the category of people over here, but I will say each and every person is a dependent. Yeah, also I'm correct. Are made dependent, are not dependent, are made dependent. Yeah. Because you know what happens is that from what I understand, I don't know whether that. See, what happens is that it's more, disability is very very individualistic thing. तुम्हें हुआ है, you know, and the theoretical understanding is कि it's a personal tragedy. जब आप पर्सनल ट्रेजेडी के उसमें जाएंगे तो डिपेंडेंट तो आप हो ही गए, बिकॉज आइदर आप अपने आप को क्योर कीजिए या फिर आपको जो मिल रहा है कि उसको लेते रहिए और उसी में खुश रहिए. मतलब उसमें आप ये मत कहिए कि आपको इस तरीके से करना था मेरे को क्या है. यू नो, आप एयर होस्टेस पे भी कह सकते हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी, आई डोंट नीड टू. बट यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं रहता है. यहाँ पे वही है कि तुम्हें जो खिला सकते हैं आप खा लो, ज्यादा मत. Standardized care. हमें पता है कि क्या करना है, तुमको नहीं पता. So I think that is where Institutionalized care is I have to understand. Is it only Like the dependency, care or that human being can also do many things which are not for mother who's giving birth to a child, feeling that there's some power, some spirit, and this child is God who's But walked now the over. idea of CP, cannot place वगैरह जहाँ पे आप शनि मंदिर, शनि मंदिर is a place in Delhi में जहाँ पे you can see a lot of people in wheelchairs. There are few who are not तो wheelchair provide कराते हैं उनको. बहुत सारे लोग use कर रहे हैं क्योंकि उनको जरूरत है, बहुत सारे लोग use इसलिए कर रहे हैं जब उनको जरूरत नहीं है. But someday what happens that if they've been called for something they become obliged. Okay, so my dissertation work is there. So children are worked with Juvenile Justice Act. So the children over there are happy with the house. But are they really happy with the house? This is the question we have to ask because with the children home. Because they are like at the end of the day, कुछ नहीं के अलावा कुछ तो मिल गया है. And what to question in that, and how much a person can be critical. No, I'm not sure whether people. I mean, I have done this 2 years work in T-Mukti, which is on care, because I did it from the disability point of view. And of course, I've taken mothers and daughters, which is a specific relationship where I want to see how, because the mother cannot go away, nah? You have to take care of, you know. And I had taken up a feminist point of view, like, you know, that unpaid work, which is the care to unpaid work ke saath. So, but I think from there, the nuance of care, of what, because it can be, like you said, बहुत सारे इसके meanings हो सकते हैं. And we've got to understand कि कहाँ से कैसे हमारे पास आएगा, जिससे कि वो कह रहे हैं देखो मैं तो care कर रहा था ये because of a person with disability. उसके बाद मुझे कुछ लगा क्या लेकिन हम लोग बोलते हैं person with disability, लेकिन कल्चरली वहाँ पे उसको कैसे मानना है. हाँ, ये समझना. देखिए डिसेबिलिटी इज अ वेरी टेक्निकल. नहीं, वो तो जैसे all कह रहे हैं कि लंगड़ा बोला. एक चीज और लाइक जैसे मेरा केयर कई बार इससे कि हम कुछ दे रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाला कुछ तुम्हें अच्छा करेगा. तो लाइक जब मेरा डिस्कशन चल रहा था वहाँ पर पब्लिक के अंदर, तो वहाँ पे लाइक अनस्ट्रक्चर वे के अंदर चल रहा था, कहीं ना कहीं फिर ये बात आई तो मैंने आपसे भी शेयर किया था कि आप काम करने जा रहे हो उसके जब उन्होंने खुद ही बोला था. फिर वो कहते हैं कि बड़ा पुण्य होगा, उन्होंने ये यूज़ किया कि बड़ा पुण्य होगा अगर तुम उनके लिए काम करोगे. तो पहले तो मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बाद में जब पता चला कि पुण्य होगा तो मतलब कोई भी कि आप उनको कुछ दे रहे हो, कुछ कर रहे हो उनके लिए, दया कर रहे हो, पीटी कर रहे हो, और इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के
बट महेश देखिए यहाँ पे आई थिंक जो निवेदिता पॉइंट आउट करने की कोशिश करें वो ये है कि जब हम रिसर्च इस सवाल पे करें सही बात। तो एक तो ये एक एस्पेक्ट ये है कि हाउ इज द पर्सन विद disability is looked at, perceived in the community. That is one part of your research. Okay, what is the cultural construction of disability practice? The thing that I'm hearing, I think Nivedita say, I don't know if I'm saying that, but I think she's saying that what are the mechanisms of care in the culture itself. तो ऐसा नहीं होगा कि वो completely ripped off हो. कुछ तो mechanisms हैं जहाँ पे जो exist कर रहे हैं. तो हम कुछ नया जाके देंगे is not the only way of perhaps. So where research becomes very important. That what is the ethics of care in या जो अनिवार्य बोल रहे हैं कि mother daughter relationality, interdependence rather than independence. No, I have always believed Does that देखना does that already exist and can we build on that? Yeah. That which exists. No, and that's where जब वो पहले कहता है ना कि तो मुझे वो वहाँ से होप लगती है कि वो हो पाएगा. और ये जो पुण्य वाला है ना, ये सिर्फ वहाँ विलेज में नहीं हो रहा है. और आई टेक द स्टूडेंट्स टू मेंटल हॉस्पिटल, तो उनको मैं खाना खिलाने वहाँ पे वो LMP है जयपुर में, तो वहाँ पे मैं गई तो देयर वाज अ 6-year-old beggar who came to me and said कि लूली मैडम तू तो कुछ दे दे. It was very interesting. मैंने कहा लूली मैडम, मैंने कहा वाह, तो दैट मीन्स पावरफुल तो मैं हूँ, मेरे पास वो है एंड ऑल दैट इज देयर. अच्छा, तो फिर मैंने बोला अच्छा तू बैठ, मैं जो भी चाहिए मैं दूंगी, तो मुझे बता कि क्यों लूली, तुझे लूली पता है मीनिंग क्या होता है? मतलब तो हो ना लूली. तो मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ. तो कहते तुम क्या हो? तो मैंने कहा मैं तो लंगड़ी हूँ. तो आई काइंड ऑफ एंड देन शी काइंड ऑफ सभी ऐसे बोलते हैं ना, टीवी में भी बोलते हैं, चाल में भी बोलते हैं, so which means that there is a particular terminology that is being used. So I just told the boss, वहाँ पे शॉप थी तो मैंने उसको बोला एक बेड खड़ी हुई है, तो मैंने उससे स्टूल ले लिया, तो मैंने कहा उसको बैठने दो, बैठ के बात मैं करता हूँ. तो जब बातचीत हो गई तो मैंने उसको भेजा, मतलब खाना, तो वो मुझे कहने लगा शॉपकीपर की, तो मैंने कहा थैंक यू. तो कहने लगे नहीं अच्छा है मैम, हमारा भी आज पुण्य हो गया. मतलब वो मेरे लिए मुझे कह रहे थे कि आज का पुण्य हो गया. और I thought I'm very powerful or whatever. But they only gave me कि अच्छा भी तुम्हारे लिए आज का पुण्य है. उसका पुण्य हो गया स्टूल लेने से. अच्छा होता कि मैं नहीं लेती. मतलब like see, why I'm bringing this anecdote is because this is where you need to understand disability at a deeper level. It's not so simple. I mean, like that we will just go there and do that. But we will have to work hard and of course there's a lot of I have a list of readings for him which he has to now begin with. Finally coming to the point. और अब मजाक कर रही थी कि पिटाई भी हो सकती है. जो मजाक हो देखो मजाक में मत लेना. Just one point if I can add. Yeah. Please. I've been trying to like we have been talking about care. मैं care को थोड़ा because इतना expand हो गया यहाँ पे care, तो मैं थोड़ा इस context में limit करके समझने की कोशिश कर रहा था. Can we say that यहाँ पे care like जो हम सोच रहे हैं कि चाहिए is more about making people sensitive. Can it be said कि यार केयर हम करने वाले तो कोई नहीं होता, ठीक है, who has given us right to care. जब हम समझते हैं कि दूसरे बंदे के साथ क्या हो, तुम क्या केयर कर लोगी जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि दूसरे बंदे के साथ माँ क्या हो, है. तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है इससे. What is the meaning of care? That no, in this context, ये भी तो किसी माँ से तो है. हाँ, in this context I am saying that it's maybe about being sensitive towards the person. वो तो है, but actual care भी तो करना होता है. No, actual care भी है. I'm just saying the stepping stone maybe the first step I feel is about making people sensitive about it. And then probably like
it can be we can build upon it. And I see, मतलब मैं कल से भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ सब प्रेजेंटेशन में. I see lot of potential in this thing के हमारे बैच के लिए some one of us goes there, शायद हमारे लिए बहुत स्कोप है इसी चीज को आगे लेके जाने का, इसको एक्सपेंड करने का. मैं कल से जी सारी प्रेजेंटेशन में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अगर हमारा बैच जा रहा है तो हमारे पास क्या स्कोप है करने का, और इसी जो एक्शन रिसर्च हो रहा है उसको कैसे आगे लेके जा सकते. बिकॉज मतलब कल मैं इमरान से भी डिस्कस कर रहा था कि मुझे समझ नहीं आएगा कि जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो जो मैंने करा उसको क्या होगा. मतलब मेरे में हमेशा एंग्जाइटी रही है और अभी से बहुत ज़्यादा भी है. वो थोड़ी रहेगी लेकिन ये है नहीं. That's the purpose of this movie. And that's a first semester syndrome. Yeah, exactly. You have to be that. अरे यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको self Every year this happens. लेकिन आप seriously मत जाओ कि आप you have gone there as God. मैंने 10 साल की एक्टिविटी से मर जाऊंगी फिर एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड आपको So finally you will be able to do certain things, but don't think that you can do everything. I think there somehow I feel जो उसका context of care आ रहा है where he is coming from, that is very important, and that is the notion of care that he is trying to generate. That care is very important. Everything else कुछ और हो सकता है of course, but वो जो relation care जहाँ से वो देख रहा है सामने वाले को, the differently able, that sensitivity, in that sense bringing sensitivity नीचे होगा, थोड़ा so close करना, वो बहुत important है. मैंने इसके ट्रांसक्रिप्ट में कुछ ज़्यादा स्लाइड्स के लिए मैंने उसको ठीक करके मैंने कुछ because I want him to start with his wherever उसको जो दिख रहा है, but of course वो पढ़ेगा and all that आगे जाएगा, but I think that is very important कि आप अपनी एजेंसी के साथ वर्कआउट करेंगे कि क्या मैं भी वहाँ पे नहीं होंगी all the time. That you are working there, I'm not there all the time, and I can only speak to you on the phone or whatever. So that is also important, I think, that we cannot do, and also we cannot do everything. That is also. But you know, it's very interesting. The relationship of care that the two of you share is also very different. But in the way Alina's been continuously, आपको तो back up कर रहे हो एक्स्ट्रा को, the way she's also talking about what you've given her. So I think this is also important to think, na? Relations of care that we have between each other. Why do we do what we do for the others? No, and I remember that अनूप को मैंने कोई 2 साल पहले बोला था कि भाई डिसेबिलिटी नहीं इंट्रोड्यूस किया है, तो अनूप ने ये कहा था कि जब तक ग्राउंड से नहीं आएगा ना हम नहीं करेंगे. तो आपकी सोचने पे तो अब ये आया तो ये शुरू हुआ, मतलब नहीं तो अदरवाइज and I also waited patiently. मैंने कहा चलो आएगा, मतलब I am told कि आएगा मगर थोड़ा टाइम से आएगा. Yes.